Yes, I'll share the link like source data source for data sheets. So this source will have repository of different data site, right? So I'm going to share this one. And what is the Power BI from where you will download this Power BI? I'm going to share that link also. Power BI desktop. So introduction to dashboard for Power BI designer. It's very simple to download in your local machine. It's not available for Mac OS, right? अगर आप में से किसी के पास iOS है या Mac OS है, so as of now it's not available for that OS, but for Windows it's completely available, right? So this is the Power BI documentation, and you can see open Power BI to more. Hmm. Instead of dashboard, use just for desktop version. So this is the interactive reports where we have this one. Can you see? This download is freely. You don't have to pay anything. Even an iota of payment is not required. I'm going to share that link also. Power BI desktop download link, right? Okay, text, right? So you just go through this download free option. So see download options and all. So you will find this interactive part where we have all these notation, how to create data models and all. So first time or foremost, let me show the CSV files from where you will get this data set. So यहाँ पे I had already uploaded all these files, customer purchase, HR employees. Let's say this HR employee attrition part. So you will get all these data set. Can you see? It's having male, female, divorce, right? So year and everything. So once you have downloaded that data file, so what you will do, you just go to the data panel on the right hand side. Can you see this get data option? This get data option is used to fetch all kind of data set in your local machine. Or there is either way you can import data from Excel data server. Direct tools get data from another source is also available here. This is the second method. Third method is get data, and here you will see all the text CSV and all. So once we have this data set here available, so this is I'm going to download. Okay, if it is not available, so you can go to GitHub, my GitHub link, and you can go click on download file. Now you have in your local machine HR employee attrition dataset, right? So I'm going to get this dataset data and this CSV download all and this Excel sheet. So I just imported Excel sheet in my Power BI data visualization part. You can see it's showing all the sheets. I'll click on the preview of this. So this is the employee business details you can see. So I'm going to load this value in my visualization part. It will reflect on the right hand side this data pane, and you will find all these applied changes.
2940 rows are there. Let's say it's taking on the right hand side. Let's say these how many row tables are there. You can see it's already shown here. Let's say I'm going to create this stack bar chart, right? So it's having A's and attrition, right? So on the basis of A's, what will be the attrition part for my team, right? This is the attrition, yes or no. Similarly, if you want to create the another stack column chart, so again, let's say I'm going to rate daily rate and department. So department was wise I'm going to seek HR, resource and sales and human resource, right? Similarly, I want to create this stat column chart. So let me click on this one and let's say pie chart. So I'm going to create this pie chart using this employee and education field, right? Or in case of any other donut chart, so I'm going to create this donut chart, distance and with gender, right? Or not the gender, then I can go for job role, right? Now suppose I want to create this ribbon chart. So this will be based upon, let's say, hourly and marital status, right? Or I'm going to check this job statistic also, right? So instead of this value, if you want to create a scatter plot, so you can go for scatter plot also, and then gender, right? So this will be the entirely different chart. Or let's say I'm going to create funnel chart. So I will be there in that part. Let's say I want to create another tabular format. So that would be the business and this environment. So it's taking another values. You can scroll down and all, right? Or you can create another line chart also. Make sure you are having all these date inside the line chart. So inside the line chart, do we have any date module? So I'm going to search in the upper table. So we don't have any date and time model. Okay, so no issues. I'm going to read daily rate and with the attrition, right? Or with the particular hourly rate, I'm going to go for education field, right? This would be the line chart for my particular value. Let's say I'm going to create this 100% stack chart. So this will be daily chart and on the basis of overtime and everything, right? Or I can select another data values also. Let's say this yearly based, right? And I'm going to deselect this one. So this will be 100% chart. Now suppose I want to select this waterfall chart. So then marital status and based upon this work life. So this would be the water level chart and another values also. Now monthly rate chart and job role. So that would be the given value. Let's say I'm having this stack area chart. This would be based upon work life load and overtime, right? Or marital status. That would be the different chart. Let's say let me take another values also. Uh, let's say I'm taking this matrix. So along with this matrix, I'm going to take this and this value and this value on the basis of job role, right? Or you can convert into tabular format also. Now I can create some slicer for my filtering part. So this slicer will create some job role, right? Now this job role will have format your visualization and slicer will be the particular drop down. I want to select in the drop down and going to up and some small values there, and then I'm going to drag it
at the right hand side, right? So that I can deploy all these filters and all, right? Similarly, I can select the another slicer that's called filter, and this time I'm going to select marital status, right? So marital status I need in the format of slicer, and I need some drop down values, right? So this drop down, I'm going to select this part and including this is the same and same here, right? Now I want to change the this condition or the format for this value. So I'll go to the format and go to the, let's say, general, and effects, go with the effects, and background color I am making something border. So this is the darker color here. Now I'll go to the title, and within the title I'm going to make it white so that it would be more visible to me. Similarly, I'm going to click on properties. No, I don't have any properties. Now visual, y-axis, I'll make it white again so that I am having more visualization. Similarly, for title also, I'll make it white, right? Now I'll go to the x-axis. For x-axis also, vertically, which is vertically available. So I'm going to click on y values. So I'm going to click on y, white, which is now visible for me. Similarly, for title itself, for axis title, I'll make it white. And you see now it's visible more, right? So I'll do one more thing here for the general, and I'll go click on shadow so that I can have more shadows here. Can you see? Shadow is off, but I'm going to click, it's now visible for everyone, right? The outside or inside, so I'm going to click on outside also, right? Then I'm going to click bottom right or top right, so you can select on this, or bottom right. Is it shadow visible to all of you? Yes. Can you see the shadows now? The effects, I'll go to the effects. I don't see shadow actually. Okay, sorry, it's inside. So once I click outside, so now it's visible to everyone. Once I have changed the means all these changes here for the single graph, so what I'll do, I'll click on home, click on format printer, and click on this values. Can you see? Now all the properties are inherited. Click on this value, click on format printer, click on this values, right? Click on this same values and click on this graph. It's inheriting all the property. Click on this one, click on this one. This is again same inheriting that property. Click in सर on, एक बार ये फिर से बताइए ना कैसे आपने इनहेरिट किया दूसरे पे में? जैसे कोई भी ग्राफ है उसको हमने सेलेक्ट कर दिया. Then I'll go to the home and then format printer at top. So format printer is copying all the properties from the previous one. So I'm going to click on format printer and then click on the next graph जिसका प्रॉपर्टी मेरे को चेंज करना है. सर जब मैं कर रहा था चेंज उसी टाइम पे मैं सिलेक्ट कंट्रोल ए करके तब चेंज करता तो सारे एक साथ चेंज हो जाते ना। मैं करके देख लेता हूँ एक बार. जब सिंगल में कर रहा था ना सर तो उसी टाइम मैं सिलेक्ट सारे कर लेता। हाँ, तुम ये बोल रहे हो ऐसे करके, लेकिन अब मुझे दोबारा से इसको सेलेक्ट करना है ना, तो मैं कैसे करूँगा? अभी मुझे ये सेलेक्ट करके वो करना है, फॉर्मेट प्रिंटर. अब मैं किसको करूँगा? अब आप ऐसे बोल रहे हो. नहीं मैं सोच रहा हूँ अभी अनसिलेक्ट करने तो कंट्रोल ए करिए और जो आपने मेथड अप्लाई किया था इस फॉर्मेट में लाने के लिए उस मेथड पे क्लिक करिए तो सर वो मतलब प्रीवियस जो मेथड आप फॉलो करेंगे वो सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा ना चारों में। नो, आई डिडंट गेट योर पॉइंट. लाइक जैसे कि इसका कुछ अलग फॉर्मेट है, राइट? सो आई नीड टू कन्वर्ट दिस फॉर्मेट टू दिस. So what I'll do,
what I'm doing exactly, I'm going to select this graph, click on format painter, and then click on this one. So how would you select more than one graph? Means might be your you might have solution. I'm not denying, but I'm going step by step. Like, can you elaborate more? Okay, so I'm having this value. So कुछ values अभी भी white है. So I'm going to create on legends or text. So we have again color. I'm going to make it white. Can you see? Then title, we have all these values here. So these details label is again options and values. Do we have values? Yes, these values are gray. So I'm going to convert it white. Can you see? Now these all values are white. Now click on this value, format painter, and then click on this one. Click on this value, format painter, and click on this graph. No, it's not going to change. Now click format painter for this tabular values. Click on this one, format painter for this, right? Click format painter, click on this one, right? One format painter for this one. So x-axis color white. I'll have to go to the title, having white. Similarly for y-axis, I'll have to make it white, and for title, I'll have to make it white, right? And the same, I am going to keep it as format painter for my filters, right? And for same, I'm going to select this values, and for my now I'm going to select this value. If it is human resource, I'm going to select this human. Can you see all these values are going to change, right? So as far as this marital status is concerned, I'm going to click on this married, right? It's the values are going to change now, right? But I'm uh, going to click on this one and this one. More options. You can click and deselect all these filters. So it will deselect the values for the same. Right now, the further values are in the original form syntax. But before creating these visualization, these graph, what you will have to do, you will have to like remove all these outliers. So outliers in what terms? Outliers inside the given values, right? So outliers, they, yes. So outliers in terms of, let's say, do we have salary here? Sales, employees, attrition, yes, business, daily rate, right? And distance, number of, if you have any salary operations, yes, we do not have any. So what we can take, we can take age gender, right? Age column. If we have age column, no, we do not have. A percentage, you can go for percentage, right? So percentage salary hike, you can go for removing this outlier for this percentage salary hike. Then you can start creating that graph. Did you get my point? तो डायरेक्टली हमें ये ग्राफ Yes. प्लॉटिंग नहीं करनी है. पहले हमें क्या करना है, पहले हमें अपने पाइथन से
हमारा जो आउटलायर के रिमूविंग के ऑप्शंस हैं, दैट इज ईदर जी स्कोर और परसेंटाइल ऑप्शन और बॉक्स प्लॉट. So these three operations you need to apply. Then you export your Excel sheet, then start creating that dashboard. Here we have outliers using IQR. Then we have outliers using G score, and here we have outliers using percentile. And all these three files are already there in the GitHub profile. I'm going to click on the right. So these Python data science is already there. One, outlier percentage, two, outlier G score, three, outlier I score. Right. So I'm going to copy this command. Firstly, remove outlier using Python. Then start writing these values. All right. So do we have any doubt till here? क्या हमें करना है, क्या उसको करना है? Then you will select what you will do. You will go to the Power BI and go to the Power BI and click on this file and save as IPY. So interactive, can you see PBX? Power BI extension is there, right? So this downloads and this will download in your local machine, and you will have you can upload the same file in your GitHub account, right? So what I have done just like this a data science Python for beginners. Thus, you can take help of this one. Can you see these files are all like this is CSV dataset. Here we have analytics. This is PBIX file. Can you see employment data का PBIX file बना हुआ है. You can take help of sample. This is sample Power BI sheet. This is solution. This is PDF file. This is Python file. Google Play Store का ये बना हुआ है. This is the Python analytics part, right? So I'm going to share these sample Power BI sheets, dashboards जो sample मैंने already बनाए हुए हैं, and we can take help of this sample Power BI dashboards along with data set. All right. You can जी सर, आपने जो पहले डेटा बताया ना सीएसवी फाइल्स और उसके बाद जो आउटलायर्स का आपने बताया, इन दोनों में क्या वो कर मतलब इनमें इनमें डिफरेंस ये है. कैन यू स्विच ऑफ नाउ? इनमें डिफरेंस ये है कि यू हैव डिफरेंट रिसोर्सेस ऑफ डेटा फाइल. So previously you had either you can take the data sheet, क्योंकि वहां पर जो है वो that's like this file, this sheet is consisting only uh, this one, this file is consisting only yes, this file is consisting only data sheets, data files का हमारे पास sheets है, only CSV file. Either you can take from this CSV file this link, any data set you can select, right? You can go for the CSV file. Either you can pick up for HR tool or Titanic dataset or sales dataset, marketing, COVID-19 dataset, right? So that's a single source कि आप वहां से dataset pick कर सकते हो. This another example concept of major project. जो आपके project हैं उनके relevant के base पर क्या हुए हैं, already solutions हैं where I had already uploaded this PBIX, जैसे कि वो sheet है. Let me show one file.
PBIX की फाइल्स हैं जो कि हमारे पास में ऑलरेडी हैं. So in this PBIX, what I'm creating dashboard. I'm fetching the files. My objective is to create the dashboard, and every part is there. So what I'm doing there. This is for Google Play Store dataset. So finally, using Python and PA. So you can write in your CV, like I know the Power BI data visualization tool, ETL tool actually, extract, transfer, load. And can you see I'm creating that kind of dashboard, right? And then I'm going to I'm fetching on the right hand side. You have seen I had fetch all these Python files. This is for Google Play Analytics, right? तो ये सब एक शीट बनाने का पर्टिकुलर डेटा सेट का टूल है. Did I answer your question? Yes, sir. Hmm. This सर is वो ग्राफ्स पूरा पावर बीआई में कर रहे हैं सर आप? yes, of course. सर Yes, आई हैव अ क्वेश्चन सर. yes, तो please. सबसे पहले मेरे को जो CSV फाइल है उसमें आउटलायर रिमूव करके ही तो प्लॉट करने हैं ना ये ग्राफ सारे, Yes, तभी yes, होंगे कि अगर yes. नहीं नहीं, आपके डायरेक्ट भी होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे. बट चूंकि जो जी कंपनी में काम होता है, कंपनी में जो काम होता है वो बेकार डेटा के ऊपर, मतलब रफली डेटा, आपका जो ग्राफ बनेगा ना वो गलत बनेगा. मतलब आप आउटलायर, मतलब आप ना गंदगी को लेकर भी आप चीजें डेकोरेट कर रहे हो, तो दैट्स इलॉजिकली कि आप उसे डैशबोर्ड बन तो जाएगा, लेकिन बन तो ऐसे भी जाएगा कि आप किसी की सैलरी 1 करोड़ लेके जाएगा. कंपाइलर विल नेवर से कि दिस इज इनकरेक्ट डेटा सेट. यू अरे आर सर आउटलायर आउटलायर तो फिर डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे ना, वो डिसाइड हम करेंगे इस बेस उस डेटाबेस के जो हम रिक्वायरमेंट होगी उस करेंगे. हिसाब से अमाउंट. नहीं, हम करेंगे कि ये डेटा सेट, जैसे मान लीजिए आपने बोला 95 परसेंटाइल के ऊपर या 0.05% के नीचे वैल्यू है, वो मेरे परसेंटाइल है. तो आप अगर बहुत कम डेटा सेट छांटना चाहते हो तो आप 99 परसेंटाइल कर लो अपर बाउंड में, और लोअर बाउंड में 0.01 कर लो. तो आप कम डेटा सेट आपका छटेगा. अगर आपने 95 कर लिया तो बहुत सारा डेटा सेट आपका घट जाएगा, रोज बहुत कम हो जाएंगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज या द श्योर रीजन सर कि श्योर. ये आपका डिसीजन है कि अगर डेटा सेट बहुत छोटा है तो 5% नीचे और 95% ऊपर आप लेके जाओ. और डेटा सेट बहुत ज्यादा है रोज में, तब आप 0.01 और 99.9% लेके जाओ. जैसे 10,000 रोज है, 4,000 रोज है ना, तब उसके लिए आप 90. तो ये परसेंटाइल मेथड है. जेड स्कोर बोलता है कि 3 स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर और -3 स्टैंडर्ड डिविएशन, जो 3 है वैल्यू जेड की, उसके नीचे और ऊपर, -3 और 3 के ऊपर जितनी वैल्यू है उन सबको घटा दो. तो आप जेड स्क्वायर निकाल लो हर रो का. जेड स्क्वायर का फॉर्मूला पता है आपको, म्यू माइनस एस अपॉन सिग्मा. तो वो वैल्यू से लेकर हमारे पास में सबकी जेड वैल्यू आ जाएंगी. अब इस जेड वैल्यू में 2 आर ग्रेटर देन 3 और लेस देन -3, उनको आप हटा दो. दिस इज कॉल्ड जेड स्कोर मेथड. और बॉक्स प्लॉट, यू कैन यूज दी बॉक्स प्लॉट. बॉक्स प्लॉट पे हम क्या करते हैं, IQR निकालते हैं, Q1 Q3. तो Q1 माइनस IQR मल्टीप्लाई बाई 1.5, दिस इज द लोअर वैल्यू. अपर वैल्यू Q3 प्लस 1.5 टाइम्स IQR, दैट्स अपर वैल्यू. तो लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू से जितनी वैल्यू बाहर है उन सबको निकाल दो. दिस इज कॉल्ड बॉक्स प्लॉट मेथड. तो तीनों ही मेथड से आप निकाल सकते हो, 2 से निकाल सकते हो, 1 से निकाल सकते हो आउटलायर. और वो आपका तरीका है कि आप क्या उस पर प्रोसेसिंग कर रहे हो. यस अर्पित, प्लीज. तो आप डेटा सेट उठाओ और एनी कॉलम सेलेक्ट कर लो. तो आप उसमें मेंशन कर दो टेक्स्ट में कि मैंने ये कॉलम को अपना बनाया है कि इसका मैं आउटलायर्स निकाल रहा हूँ. अब ऑब्वियसली किसी के नाम के ऊपर तो आप डेटा सेट आउटलायर निकालोगे नहीं, क्योंकि वो नाम है तो वो क्वांटिटी तो है नहीं. आउटलायर्स हम हमेशा क्वांटिटी और नंबर्स के ऊपर निकालते हैं. किसी मेल फीमेल पे तो आप ठीक है सर. आउटलायर्स निकालोगे नहीं.
है ना, किसी की सैलरी के ऊपर निकालोगे आउटलेट्स, है ना, किसी की एज के, किसी की हाइट के, किसी के कॉस्ट के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर, सेल्स टारगेट के ऊपर मतलब आउटलेट मतलब निकालोगे। सपोज करिए सर मैं सैलरी के ऊपर निकाल रहा तो हूँ। डाटा होगा। सर आई हैव अ क्वेश्चन सर हाँ हाँ, कि बोलो बोलो। सपोज वी हैव कंसीडर द सैलरी, मान लो तो मैं फिर जो भी प्रेडिक्शन करूंगा उस डेटा के ऊपर, तो मान लो किसी की सैलरी 40,000 है, अराउंड 50,000 है, एंड तो मैं उसके तो 40,000 और 50,000 के अराउंड पीपल को मतलब निकालूंगा या क्या करूंगा उसमें? नहीं, आप अभी कुछ भी नहीं कह सकते, किसी की रेंज को नहीं बोल सकते। आपका जो कैलकुलेशन है वो अपने आप आपको वैल्यू देगा। जैसे कि आप पहले, आप ऐसे जी मत देखो कि डेटा क्या है, आप भूल जाओ डेटा क्या है, जी आप मेथड पकड़ो। जी। लेट से आपने परसेंटाइल मेथड पकड़ा। अब आप ओके। परसेंटाइल मेथड में ये देख लो कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं। मान लो नंबर ऑफ रोज बहुत ज्यादा है, तो आप 99 परसेंटाइल उसका कैलकुलेट करो और 1 परसेंटाइल कैलकुलेट, और उनके उनको हटा करके देखो आप कितनी रोज आ रही हैं। अगर वो रोज बहुत ज्यादा है तो आप और कम कर लो। राइट? नहीं समझे आप? देखो, परसेंटाइल मेथड में हम क्या करते थे, परसेंटाइल में हम 95 परसेंटाइल और 5% चेक करते थे। तो अगर आपका डेटा ठीक सेट है। बहुत कम है, तो आपका 95 और 5% में जो बीच में जो वैल्यू छूटेगी ना, वो भी बहुत कम छूटेगी। लाइक, ओके। है ना। लेकिन अगर आपका डेटा बहुत ज्यादा है, जैसे आप ऐसे देखो, आप जैसे कि परसेंटेज, जैसे आपकी क्लास में 1,000 बच्चे हैं, अब 1,000 बच्चों का 5% निकालो, कितना होगा? 1,000 बच्चों का 5% मान लो भाई, दो 5%, तो वही 20 होगा अप्रोक्स। 50 होगा। 20। 50 होगा हाँ ना, 50 50, होगा, ठीक है। 50 होगा ना। हाँ आपने 50 बच्चों को क्लास से हाँ। बाहर निकाल दिया, ठीक है। और ऐसे ही आप 95 ठीक से है। ऊपर 5% उधर निकाल रहे हो, आपने 100 बच्चों को निकाल दिया बाहर, है ना। 1,000 में से आपने हम्म। 100 बच्चों को निकाल दिया, मतलब आपने 10% अपना डेटा तो वैसे ही बेकार कर दिया। तो आप ये नहीं कह सकते कि 10% जो है मेरा आउटलायर है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी जी। फिर से आप देखो, 1,000 का आपने अगर 5% और 95% कैलकुलेट किया, तो आपने 5% डेटा, मतलब कि आपने 50 बच्चों को इधर और 50 बच्चों को इधर आपने वो कर दिया, प्रून कर दिया, क्योंकि रिमूव। रिमूव हाँ। कर दिया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ठीक दोनों है। तरफ ही डेटा सेट होता है, जो कि मीन वैल्यू के बहुत छोटा हो और मीन वैल्यू से बहुत दूर हो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट साइड पे बहुत दूर जा रहा है जो मीन के, आप उसको हाँ हटा रहे हो। हाँ। ये तो है। ठीक है। और कैलकुलेशन ये या कहती है श्योर। कि 5% और 95% जो वैल्यू है उनके बहुत, जैसे कि मैं कहता हूँ हम सबकी एज जो है, हम में से जो भी अभी मीटिंग में ज्वाइन है, वो सब अराउंड 25 से 30 के बीच में है। लेकिन मान लो सपोज कोई ऐसा जी पर्सन जो है वो 65% का हमारे मीटिंग में जुड़ा हुआ हो, तो वो हमारे लिए क्या है, जी आउटलायर है। जी दैट्स नॉट इनकरेक्ट, वो भी सीखना चाह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम बोलेंगे सर आप थोड़ा सा बाहर जाइए, क्योंकि हम थोड़ा ना पार्टी वाला माहौल अभी यहाँ पे हमारा शुरू होने वाला है, तो हम थोड़ा पार्टी करना चाह जी। रहे हैं, तो हम ये नहीं चाह रहे हैं कि सीनियर सिटीजन होके आप यहाँ ज्वाइन करें। तो हम उन्हें थोड़ा सा साइड कर रहे हैं, हम उन्हें रिमूव नहीं कर या रहे हैं। ठीक है, ये है मीनिंग आउटलायर्स को। हो सकता है ठीक है, कोई समझ गया सर, कोई थैंक यू। 15, अब कोई 15 साल का बच्चा भी ज्वाइन हो, तो हम उसको भी बोलेंगे कि भाई बेटा तुम थोड़ा सा भी साइड हो जाओ, मीटिंग छोड़ दो, हम थोड़ा पार्टी करने जा रहे हैं। तो आप अभी बहुत छोटे हो, तो बहुत छोटे से भी हमें दिक्कत है और बहुत बड़े से भी। बहुत छोटा मतलब 5%, बिलो 5%, बहुत बड़ा मतलब अबव 95%। अब बात आती है कि सर इज इट फिक्स हम्म। 5 और 95%? तो उसके लिए मैंने आपको बताया, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ रोज। अगर आपके पास 1,000 से ज्यादा है, तो मान लीजिए 2,000 है, तो आप पता है 400 डेटा अपना रिड्यूस कर रहे हो, 200 डेटा रिड्यूस कर रहे हो इन केस ऑफ 4,000 में। राइट? लेकिन अब आप 1% दे रहे हो, अब 1,000 का 1% कितना हुआ, 10। तो आप 10 रिमूव करने में कोई दिक्कत नहीं है। और उधर 99 के ऊपर मतलब अगेन 1%, तो आप 20 लोगों को रिमूव कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 1,000 में से 20 को आप बोल सकते हो कि ये एक एक्सेप्शन है, बट आप 1,000 में 200 लोगों को थोड़ी बोलोगे कि एक्सेप्शन है, या 100 लोगों को थोड़ी बोलोगे कि एक्सेप्शन यस सर, यस है। सर। एक्सेप्शन की मीनिंग क्या होती है, एक्सेप्शन मतलब रेयर टू रेयरेस्ट। 10% नहीं यस। होता है रेयर टू रेयरेस्ट, है ना।
तो ये है यस यस। परसेंटाइल मेथड। अब बताओ क्वांटाइल परसेंटाइल का, तो सॉरी आई क्यू आर का। आई क्यू आर में लोअर लेवल निकालोगे आप Q1 और Q3 से, Q1 प्लस Q1 माइनस 1.5 आई क्यू आर और Q3 प्लस 1.5 आई क्यू आर। उन दोनों के रेंज पर लोअर और अपर बाउंड में जो वैल्यू है उसको हटा दो, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप ही वैल्यू दे देगा। उसमें बॉक्स प्लॉट में अपने आप वैल्यू देता है, इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करोगे। और ये फॉर्मूला कहाँ से आएगा? ये फॉर्मूला इस टेक्स्ट में ऑलरेडी, इन फाइल्स में ऑलरेडी जो है वो लिखा हुआ है, राइट, जो मैंने हम यहाँ से पढ़ रहे हैं पिछले 2 दिन से। फिर एक और मेथड है जेड स्कोर। जेड स्कोर में आप सबका जेड स्कोर निकालते हो, विच इज ग्रेटर देन 3 और लोअर देन -3, आप उसको रिमूव कर देते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिड आई कैन यू कनेक्ट योर डॉट्स? Any issue regarding project? यस 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 सर। Yes, बोलो। नो नो, थैंक यू सर। You're समझ गया welcome, समझ। you're welcome। अगर जिसने ये प्रोजेक्ट कर लिया, they can add in their CV and they can add in their resume also, like I have done this project, this CV, and this would be really that we have to plot a only graph, or like you shown as different graphs. Yes, you will have to create only graphs, and then before pre-processing, that ETL process जो हमारा ETL process है, right? सर वो हमारा डेटा सेट पावर बीआई को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सर? Here is the solution. Like click on get data, and if you want to import Excel sheet, you can go for Excel workbook. If you have CSV file, you can go up CSV file. Can you see my screen? यस सर, यस सर। All right, this is the one method. Or you can go for the data pane also. On the data pane, you can check here also. Right? यस सर, थैंक यू। All right. So once you just download this PP Power BI and